Let x is equal to 3.052 bar. We need to write this recurring decimal in the form of p upon q. For that algorithm, first I told you you need to create only those digits in the decimal number part which are being repeated, that means which are under the repeating block. तो यहाँ पर हमें क्लियर समझ आ रहा है कि जो जीरो है ये रिपीटिंग ब्लॉक में नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं आ रहा है. So I told you if there is one or two or more digits which are not in repeating block, first we need to bring them in the whole number part by the multiplication of both sides of the equation by 10 or 100 or 1000 whatever is required. तो ये भी डिपेंड करेगा कि जो डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है वो कितनी डिजिट्स हैं. अगर वो एक डिजिट है तो फिर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड. अगर वो दो डिजिट है तो हमें पहले 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सो ऑन. तो यहाँ पर एक डिजिट है तो हमें पहले 10 से मल्टीप्लाई करके इसको लाना पड़ेगा. 10x इज इक्वल टू 30.52 बार. जैसे ही हमने 30.052 को 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल ने मूव किया वन प्लेस टूवर्ड्स राइट एंड इट बिकम्स 30.52 बार. तो ये मेंटरी होता है पहले कि डेसिमल नंबर पार्ट में सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स ही रह जानी चाहिए, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स इधर नहीं होनी चाहिए. उससे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर वन भी नहीं बनाओगे. तो अभी हमने इसको इक्वेशन नंबर वन नेम नहीं किया था बिकॉज वी वर ऑब्जर्विंग वन डिजिट not under the repeating digits block, under the block of repeating digits. तो पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और उसको जीरो को हम लेकर आए होल नंबर पार्ट में, और जब रिपीटिंग ब्लॉक रह गया डेसिमल नंबर पार्ट में तो अब हमने इसको नेम किया 1. Now we have to think of, again we have to multiply by 10 or 100 or 1000 depending upon the digits under the repeating block. इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रिपीटिंग ब्लॉक में जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतने जीरो हम वन के साथ यूज करते हैं एंड वी डिसाइड बाय विच नंबर वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन. अभी जो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था वो सिर्फ इस जीरो को होल नंबर पार्ट में लाने के लिए किया था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जब रिपीटिंग ब्लॉक रह जाएगा तो अगली स्टेप में हम सोचेंगे कि इस रिपीटिंग ब्लॉक के अकॉर्डिंग हमें इस इक्वेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट इज 100. क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक में दो डिजिट्स हैं और दो डिजिट्स का मतलब है कि वन के साथ दो जीरो आने चाहिए, दैट मीन्स 100. सो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर वन बाय 100. मल्टीप्लाइंग equation 1 by 100, we get on the left we get 1000x because 100 into 10x. On the right 100 into 30.52 बार. लेफ्ट साइड पर 100 इंटू 10 हो गया 1000x एंड ऑन द राइट 100 इंटू 30.52 बार will become 3052.52 बार. क्यों? क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने पर जो 52 बार है यानी 52 52 52 52 एंड सो ऑन रिकरिंग डेसिमल है, उससे दो डिजिट हमारे होल नंबर पार्ट में आ जाएंगी. वाई? बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल दो प्लेस मूव करेगा टुवर्ड्स राइट. तो जैसे ही वो दो प्लेस मूव करेगा राइट पर तो हमारा नंबर बन जाएगा 3052, या अगर मैं डिजिट बाय डिजिट बोलूं तो 3052.52
52, 52, 52, 52, and so on. That is simple. 3052.52 bar. And that becomes second. Now we need to write the equation number 1 under equation number 2. So 10 x equals 30.52 bar. We may write it as 30.52 bar. Be very careful in this step because I told you again and again that you must write equation 1 under the equation number 2 in such a way that decimal must come under the decimal. इसमें क्योंकि जनरली बच्चे गलती करते हैं, वो आगे पीछे लिख देते हैं, उससे कंफ्यूजन हो जाता है और मिस्टेक हो जाती है. You need not to commit that particular mistake. तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए. And after that you will have to subtract. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस. लेफ्ट साइड पर 1000 से हम 10 को माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 990 x. 990 x. And on the right 52 bar is subtracted from 52 bar, so we get 0. तो डेसिमल के बाद में आ गया 0 और लेफ्ट साइड पर 0 from 2 2 and 3 from 5 2 and 0 and 3. So we have 3022.0, that is simply 3022 on right. Now to find the value of x, we have to transpose 990 to the right hand side, so it will divide 3022. So x is equal to 3022 divided by 990. Now we have to divide by 2. 2 ones are 2, 2 5s are 10, 2 ones are 2, 2 ones are 2, divided by 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 5s are 10. Check now if there is some common factor of the numerator and denominator still, so you can divide. Otherwise, that will be your final answer. I guess there is no common factor now because the denominator is divisible by 5 and 3 and 9, but numerator is neither divisible by 5 nor by 3 nor by 9. So yes, this is final answer. और हमने x उसी को एज्यूम किया था जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी p अपॉन q फॉर्म में 3.052 बार. तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनली व्हाट वी गेट, thus 3.052 bar is equal to 1511 upon 495. That's your final answer.